फिर से सैलरी y मोड में चले into गए। p into x0. y नॉट प्लस Okay, ma'am. हम्म Plus p into uh, अभी we are using forward, no? तो which operator will come? so in case of forward, we'll have to use minus. No. Oh, plus. Delta y naught. Okay, delta No, y no, naught. Delta y minus naught. is, but we are writing first order, no? So Okay, ma'am. with this only p will come. So y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 Yes, ma'am. upon 2 factorial into delta square y naught plus next term would be P p minus 1 p minus 2 P minus 2 upon 3 3 factorial. factor into delta cube cube y naught. and this will go it totally. अभी कौन से ऑर्डर तक हमें फॉर्मूला लिखना है ये डिपेंड करता है कि हमारा जो टेबल है फॉरवर्ड डिफरेंस का इट इज गोइंग अप टू विच ऑर्डर. तो जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा टेबल में अप टू दैट ऑर्डर वी आर गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला. तो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला अप टू 3 ऑर्डर. ठीक है. सो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे जो जो चीजें फॉर्मूले में चाहिए हमें वो कैलकुलेट करेंगे. लाइक आई नीड y नॉट, आई नीड p into delta y naught, then delta square, delta cube and so on. So accordingly we are going to work on it. So पहले हम p निकालते हैं. p का फॉर्मूला क्या होता है? p का फॉर्मूला क्या होता है? x minus xn upon ना xn आता है बैकवर्ड में. x naught रहेगा. yes x minus x naught upon h. तो ये होता है हमारा p का फॉर्मूला इन फॉरवर्ड केस. ठीक है. अब बताओ डेटा पे तो हम डेटा लिख लेते हैं. डेटा क्या दिया हुआ? व्हाट इज गिवन टू अस? वी आर गिवन पॉइंट्स. ठीक है. जिसमें क्या है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है. अभी 0,5 है, 1,5, 2,9, 3,23, 4,23. टेल मी व्हाट आर x कोऑर्डिनेट एंड व्हाट आर y कोऑर्डिनेट. आई विल राइट ओवर हियर इन द टेबल ऑफ फॉर्म. x Ma'am, का 0 and y5. 0 then y5. y5. Y is 5, ma'am. Okay, y is 5. Okay, that way you're saying. Okay. Yes, ma'am. Next. Okay, Then next. x is 1 and y is 5. Yes, right. X is Next. 2, X y is is 2, 9. y is 9. Yes, then 3, then X is 23. 23, 4, 53. तो ये हो गया हमारा टेबल फॉर्म में. जो पॉइंट्स देते हैं हमने उसको टेबल फॉर्म में लिख लिया है. दैट्स ऑल. सो फ्रॉम दिस टेबल कैन यू मेक आउट की व्हाट आर वैल्यूज ऑफ x, x नॉट. ओके, x क्या होता है? अब ये फॉर्मूले में आई नीड x आल्सो. व्हाट इज x? x क्या होता है? मैम जो 1 मतलब 0 1 2 3 4 ये सब x है हमारे, तो उसमें से हम लोग को x माइनस x नॉट करना है और h हम लोग का ये दोनों का मैंने x का प्रीवियस क्वेश्चन में हम x क्या ले रहे थे? व्हाट x वी वर टेकिंग? x वो होता है जिस पॉइंट पे हमें बोला गया कि ये पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करो. ठीक है. अभी ये देखो x इक्वल्स टू 0 2 4 6 के लिए हमें पता है कि y का वैल्यू क्या है. तो हमको पूछ रहा था कि x इक्वल्स टू 1.5 के लिए y का वैल्यू क्या होगा वो निकालो. आर यू अंडरस्टैंडिंग x क्या होता है? सो x इट इज दैट वैल्यू एट व्हिच वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू. तो क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x कौन से वैल्यू पे हमें निकालने के लिए पूछ रहा है? नहीं दिया. मतलब हमें किसी वैल्यू पे इवैल्यूएट करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि पॉलिनोमियल निकालो. So we have to keep x as it is and we have to find out the polynomial. Polynomial मतलब क्या? कुछ an equation which will be containing a x in it. Equation. तो x will be as it is. x naught क्या हो जाएगा? x will be as it is. x naught क्या हो जाता है? x naught क्या होता है? x naught is first value of x. x naught क्या होता है? सब भूल गए, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. x naught क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ x क्या है इधर? 0 अपॉन h. h कितना दिया हुआ है? 1. h हम लोग को 1. h कैसे मिलता है? So between 0 and 1. डिफरेंस सबका डिफरेंस कांस्टेंट रहता है. किसका? x का डिफरेंस लेना होता है कि y का डिफरेंस चेक करना होता है? x का मैम. यस. तो जब हमें h का वैल्यू चाहिए तो वी हैव टू सी कि वैल्यूज ऑफ x कौन से इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस्ड है. दैट इज 1 इन दिस केस. ठीक है.
so x minus 0 is x upon 1 is x. Okay, तो p का वैल्यू हमें मिल गया x. Now next what I have to do, I have to calculate delta y naught, delta square, delta cube. तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? टेबल. Now prepare backward difference table. No, sorry. क्या बनाना है हमें? फॉरवर्ड. Yes, because forward formula use कर रहे हैं. So prepare forward difference table. तो पहला कॉलम किसका रहेगा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में? वाई नॉट का. वाई नॉट. वेरी गुड. हाँ, कैसे आंसर करते हो तुम लोग? मैम डेल्टा वाई नॉट का. पहले हाँ डेल्टा वाई नॉट ऐसे ही मिल जाएगा ना वाई के वैल्यू के बिना. वाई का नहीं, कॉलम पहले रहेगा देन डेल्टा वाई वाई देन नॉट, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एंड सो ऑन. स्क्वायर. वाई नॉट मत बोलो. वाई हाँ, नॉट वाई मतलब एन. सिर्फ कॉलम होता है. हाँ. देन वाई का वैल्यू क्या है? 5 5 9 23 53. दीज आर वैल्यूज ऑफ वाई जिसका हम डिफरेंस लेंगे टू कैलकुलेट आवर नेक्स्ट कॉलम व्हिच इज डेल्टा वाई. सो 5 minus 5. चलो बताओ डेल्टा 0. वाई का एंट्री क्या होगा? 0. नेक्स्ट 4. नेक्स्ट कितना होगा? नेक्स्ट 14. 14. 14. और नेक्स्ट 30. 30. 30. 13. ओके 30. 30. और 30. नेक्स्ट 30. हाँ. नेक्स्ट अभी डेल्टा स्क्वायर का कॉलम बोलो. 4. 4. ओके. 10. नेक्स्ट 16. ऑलराइट. फिर हम डेल्टा क्यूब का कॉलम बनाएंगे. 6. 6 and this is also 6. 6. 6. फिर डेल्टा रेस्ट टू 4 क्या हो जाएगा? 0 0 0 मतलब 0 0 ही. 0 हो जाएगा. So it makes no sense, right? Like with डेल्टा हमारा जो क्यूब फॉर्मूला तक है, हम लोग को. हाँ जो फॉर्मूला रहेगा that will go up to third order. Fourth Third order क्या हो order. गया हमारा? 0 हो गया. So there is no need of writing fourth order because it is 0 and you multiply anything with 0 you will get 0. So your formula will be up to delta cube. So from this table what are the values of y naught, delta y naught and so on? बताओ. y naught क्या हो जाएगा फिर? y का फर्स्ट वैल्यू y का फर्स्ट वैल्यू 5. y. Then delta y naught. delta y naught क्या डेल्टा होगा? डेल्टा वाई नॉट की फर्स्ट वैल्यू 0. delta y naught is 0 मैम. 0. delta square y naught 4. 4. delta cube y naught will be 6. 6. ठीक है. Now you put it in the formula and calculate and tell me what you will get. So y naught is 5 plus p I got x, y naught I got 0 plus x into x minus 1 upon 2 factorial is 2. Delta square y naught is 4 plus x into x minus 1 into x minus 2 upon 3 factorial is 6 into 6. So you just simplify करो and tell me what answer you're getting. ओके तो उसको किसी ने सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो क्या? 5 प्लस एंड ऑल. 5 plus x into 0. So x into 0 is 0 only, so there's no need of writing. इधर क्या हो Yes जाएगा? मैम. 2 2s are x 4. को ये मैम 6 and 6 will 2x get स्क्वायर cancelled. माइनस x 2x स्क्वायर माइनस 2 x. 2x square minus 2x, right? हाँ अभी ये लास्ट वाला टर्म सॉल्व करो क्या होगा? Ma'am, final one is 5 plus x cube minus 2x square plus x. Okay, let's check. So ये हो जाएगा 5 plus 2x square minus 2x. इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x cube
minus 2x square minus x square plus 2x. Am I right? So you can see this term and this term is getting cancelled. This term and this term is getting cancelled. What is left now? So I'll write highest order. x cube plus 5. So x cube. No, ये दिख नहीं रहा है minus x square. Sorry, Minus x cube x square minus plus 5. x So square this plus is the final answer. This is the final answer. All right. So students, with this problem I took it purposely so that ki you should understand कि sometimes it happens, आपको polynomial पूछा रहेगा and आपको x का value नहीं दिया रहेगा, तो you should not say कि the question is wrong and all. Okay, this value is not given. So you are asked to evaluate, estimate the polynomial. जो polynomial मिलेगा, तो ये polynomial मिला है हमें. तो अगर आप कोई भी वैल्यू मुझे पूछ लो कि मैडम अभी मुझे किसके लिए पता था 0 1 2 3 4, अगर मैं आपको पूछूं कि चलो 3.5 के लिए बता, तो आई कैन पुट x की जगह पे 3.5, इसमें पुट करो 3.5 का क्यूब माइनस 3.5 स्क्वायर प्लस 5. सो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम क्या बताता है कि आपको अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू पता है तो इन दोनों के बीच में इक्वेशन क्या है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो ये इक्वेशन बता रहा है कि आप जब x का वैल्यू पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या होता है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग किड्स. यस स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. ठीक है. So I think that's all. Do you want one more problem on this or shall I go to the next method? So you want one more problem on this? तो कि इतना टाइम क्यों लगाना है तुम लोगों को? चलो, we'll start with languages का method and then हम इसके ऊपर problems end में करेंगे if we get time, because it's already 8:20 and languages भी आज ही खत्म करना है. So we have taken 4 problems on Newton's forward and backward. So what is Lagrange's interpolation formula? तो स्टूडेंट्स, अगर हमने न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में अगर हमने देखा होगा तो फॉर्मूले में हमें एच का वैल्यू चाहिए रहता है, और एच के वैल्यू के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि वैल्यूज ऑफ एक्स शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस, दे शुड बी प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस. ओके, तभी आपको एच का वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट. जबकि लैंग्वेजेस में ऐसा कुछ नहीं है. वैल्यूज ऑफ एक्स कैन बी एट इक्वल डिस्टेंस और वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी एट इक्वल डिस्टेंस, नो प्रॉब्लम. ओके, तो वो जो क्राइटेरिया है कि दैट वैल्यूज ऑफ एक्स शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस, वो इधर नहीं है. So languages formula क्या होता है? तो first I'll tell you for 3 points. Very easy to remember, kids. I'll tell you also how you can remember. Suppose you are having 3 points with you like this: x naught, comma f of x naught. I hope आपको पता है कि इसे x coordinate कहते हैं, इसे equation में डालने के बाद जो value मिलता है उसे y coordinate कहते हैं. y coordinate. Next x1, comma f of x1, and the last point is x2, comma f of x2. So only these 3 points are there with you. ठीक है. एंड तो लैंग्वेजेस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंड आपको बोला है कि कोई ये एक्स नॉट के लिए आपको पता है, एक्स वन के लिए पता है, एक्स टू के लिए पता है कि वाई का वैल्यू क्या है. ठीक है, एंड दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू. अगेन आपको कोई पूछा इसके बीच में आ गया कोई वैल्यू, इसके बीच में कोई वैल्यू आ गया, और उस वैल्यू पे आपको फाइंड आउट करना है कि वाई का वैल्यू क्या है. तो एज आई टोल्ड यू कि इट इज नॉट नीडेड कि वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एट इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. मतलब अगर पहला वैल्यू 0 तो दूसरा वैल्यू 2 हो सकता है, तीसरा वैल्यू कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दे आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस. ऑलराइट, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर 3 पॉइंट्स. द फॉर्मूला इज, रिमेंबर कैसे याद रखना है आपको, तो पहले ना एफ ऑफ एक्स नॉट लिखो. ठीक है, इट्स इन न्यूमरेटर, ये चीज आपको याद रखनी है. ऑलराइट, सो एफ ऑफ एक्स नॉट हो गया ना. अभी एक्स नॉट को छोड़कर कितने पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स? गिविंग एक्स नॉट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? एक्स नॉट को छोड़कर कितने पॉइंट्स है? x1 एंड x2. राइट किड्स, x0 को छोड़ के कितने पॉइंट्स है? x1 and x2. So those points you are going to subtract from x in the numerator. So x minus x1, x minus x2. Okay, the same point, that means x1 and x2, the same points will get subtracted from x0 in the denominator. Okay, did you understand what is the logic for it? So first you wrote f of x0. तो f of x0 क्या हो गया? Hello, did you all understand this? x0 ले f of x0 लिखा, ठीक है.
So x naught को छोड़कर कितने पॉइंट्स बचे? x1 and x2. So these points will get subtracted from x, and the same point will get subtracted from x naught in the denominator. ओके तो ये हो गया f of x naught के बारे में. The same way we'll write for f of x1 लिखो. Now except x1 कितने पॉइंट्स बचे? x naught and x2. So they will get subtracted from x in the numerator, and the same point will subtract from x1 in the denominator. Are you understanding how it is going? What is the logic to remember? चलो लास्ट टर्म बताओ. क्या अभी इधर स्टॉप करेंगे कि एक और टर्म आएगा? एक और टर्म आएगा. हाँ, अभी ये f of x not f of x1 हो, अभी f of x2 आएगा. So except x2, how many points are there? x0 and x1. Yes, so they will get subtracted from x in the numerator. And the same point will get subtracted from x2 में से subtract करोगे x2 minus x0, x2 minus x1. 1. So ये हो गया formula for 3 points. The same I'm writing for 4 points, and you're going to tell me how to write. Now 4 points. So let those points be x naught comma f of x naught, x1 comma f of x1, x2 comma f of x2, x3 comma f of x3. So these are my 4 points. चलो अभी अगर आपको ये समझा तो आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा for 4 points. Tell me what should I write first? मैम फर्स्ट हम लोग f of x no. f of of x not x0. side लिखते. Yes, f of x naught लिखा फिर. तो Okay, x so minus except x1 Then x minus x1, x minus into x minus x2, x2 into x minus into x3 x minus x. into x minus yes, and the same point we will subtract from upon x0 minus x0, x1 x0 minus x1 into x0 into minus x2 and into x0 minus x3. that's Yes, right ma'am. plus not minus next x F of x1 f of x1 f of x1. Okay, except x1. yes x minus x minus x0 x0 into x minus into x minus x2 x2 into x minus into x x3 minus x3 Good. Next. upon x1 x1 minus minus x0 x0 into x1 into x1 x1 minus minus x2 x2 into x1 x1 minus minus x3 x3 Right. Plus. plus f of x2 So okay, ऐसे कितने f of टर्म्स आएंगे x2 फिर? 4 मैं terms आप ma'am. लोगों को f of ये पहले लिखने के लिए बोलती हूँ so that कि आपको पता चले कि आपको कौन कौन से पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है. So f of x2 लिखे तो मतलब x2 आया था तो except x2 बचे 3 points, so those will be subtracted. x0 or x1 Yes. or x3 Yes. And the same points will get subtracted from x2 in the denominator. I hope everyone has understood this. All right. और एक और टर्म आएगा ना, एक लास्ट टर्म yes आएगा ma'am f of x3. f of x3 Yes. So f of x3. So if x minus x naught, x minus x1, x minus x2, and the same will be subtracted from x3. Hope you have got an idea. So you all can take the screenshot of the formula and then we'll quickly start with the question. So done. So I'll be taking one question on it. Have you all taken the screenshot? Yes, ma'am. Okay. So we'll start with the question now. So given following set of values of x and f of x, given
Now, you can see in this, the values of x are not placed at equal distance. Okay, if this is a question, okay, obviously this question will come from second unit, okay, in the examination. So you should understand, कि आपको solve कैसे करना है, because sometimes it will happen, कि the which method you have to use, it will not be mentioned in the question. Which method you have to use, it will not be mentioned in the question. So it's your own understanding कि आप कैसे analyze करोगे कि this method we are going to apply on this. ठीक है? So what you have to observe, like if the values of x are placed at equal distance, then Newton's forward या फिर Newton's backward use करो. So I can see clearly that the values of x are not placed at equal distance. That means देखो इधर difference कितने का है 1, इधर difference कितने का है 3 का है, then इधर difference कितने का है 1 का. Okay, so they are not placed at equal distance. That means you cannot apply Newton's forward or Newton's backward. So you have to apply Lagrange's interpolation formula. Now, to apply Lagrange's interpolation formula, how many points are there here? How many points are there? Which formula are you going to apply? Yes. Lagrange's Hello. formula. No. Okay. How many points are there? Like 3 points or 4 points? So by Lagrange's interpolation formula. 4 points, so, ma'am. Yes. So 4 points formula we are going to apply. So interpolation formula we have. So again we are going to write down the formula for 4 points. So just write down. So this is for f of x naught. Then f of x1 will come. मैम Then लेकिन f of x. इससे मिनट बोला f of 3 तक करने के लिए. अरे भाई एस्टिमेट करना है. अब ये दिख रहा है आंसर तुमको ये बताया. x. रुको मैं बताती हूँ कैसे करेंगे. डोंट वरी. So ये f of x1 f of x naught लिखा है in the numerator. So x of x naught क्या हो जाएगा? x1, x2 and x3 the point will get subtracted from x. तो ये जो x आता है फॉर्मूले में उसकी जगह पे आपको बोल रहा है 3 रखने के लिए, बिकॉज ये दिखते ना y of x निकालो. y of x मतलब कि आपको x की जगह पे क्या रखना है 3 रखना है. तो y of 3 का वैल्यू आपको पता चलेगा. आपको वैल्यू किसके लिए पता है? 1 के लिए पता है कि y x का x इक्वल्स टू 1 के लिए आपको पता है कि y का वैल्यू क्या है 10. x इक्वल्स टू 2 के लिए y का वैल्यू कितना है 15. x इक्वल्स टू 5 के लिए y का वैल्यू कितना है 22. बट डू बस यू नो x के x लिए नहीं इक्वल्स पता. टू x इक्वल्स टू 3 के लिए क्या है y का वैल्यू? डू यू नो दैट? नो. सो उसी के लिए आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट करो. सो ये ऐसे फाइंड आउट किया जाएगा जहां जहां पे भी x है आप वहां पे क्या रखोगे? 3 रखोगे. अंडरस्टैंडिंग? चलो फॉर्मूला कंप्लीट करने में हेल्प करो. सो x नॉट माइनस x3 हो जाएगा. नेक्स्ट आएगा f of x1. f of x1 except x1, x naught, x2 and x3 will get subtracted from x. And the same point will get subtracted from x1 in the denominator. Next, f of x2 will come, then this plus, then x minus x naught, x minus x1, x minus x3 upon x2 minus x naught, x2 minus x1 and x2 minus x3. At the last point, now do you have all the values with you? Yes. x का वैल्यू क्या है बताओ क्वेश्चन में? 3. x का वैल्यू क्या? 3. yes. x naught 1. what is x? 1. x1 2. x2 5. x3 is 6. Similarly, you're having f of x naught, f of x1. f of x naught is how much? 10. And f of x1 is 15. 15. 22 and this is 35. 35. So I have written all the values. You put it in the formula and get the answer. Chalo, solve karo फटाफट.
So are you all able to substitute the values in this formula? Yes, ma'am. Are you all solving it? 3 minus x1. मैम 9 आएगा ऊपर का पूरा करके. First term. Okay, I will not waste time writing this. The first term solve individually. हर एक term solve करो students. Don't try to solve all the terms together. Individually. अपर एक टर्म एक. मैम अपर टर्म 9 आया. अपॉन का निकाल रहा Okay. हूँ. 9 into पूरा simplify 9 करके ही बता दो. Other Okay, kids ma'am. also solve it and tell me. Other kids solve it. Okay, फटाफट बता जरा first term solve करने बाद कितना आता है value? Ma'am, is it the first term is minus 3? First term minus second term बताओ कितना आ रहा है solve करने पे. Everybody solve it. Unless you will do it, you will not be able to understand how the calculation is being done. Core x0, x1, x2, x3 कितना है, that is also mentioned. You have to put it in the calculator and solve it and get the answer. Second term solve करने पे क्या आ रहा है? Why you're taking too much time? Second term का 15? value कितना है? 15. 15. Yes, 15 is right. Okay, ma'am. What about other kids? Are you all able to do it? Not able to do it? Tell me at least how will I come to know? Unless you will tell me. आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि do I do it? No response. Ma'am, I am still आ रहा है solving मैम. one by Okay, one. तो
Say at least no, you're solving. No response at all. मैम थर्ड वाला -11 आया है. Third one is not -11. It's +11. Fourth one is -19.2. No, not fourth one is not 19.2. Third one is +11. -7 fourth. Minus क्या? 7. -7. That's right. So अभी कितना हो जाएगा? -3 + 15, 12. 12 + 11, 23. 23 - 7, 16. The 16 is the answer for this question. Hope everyone has understood this. Yes, ma'am. I'm giving you one question. Do it on your own. A question. Using Lagrange's interpolation formula, find the value of f of 4. F of 4 for the following points. The points are this way: 0, 3, 2, 3, and 5, 18. So these are 3 points given to you, and you have to evaluate f of 4. Will you all do it? So इधर अभी 3 points ही दिए, तो you just have to write the formula for 3 points. चलो quickly tell me what will be the formula for 3 points. x0, x1, x2 सब बताओ मुझे. What is given? x कितना दिया हुआ है? x x0 2 अच्छा x4 दिया हुआ है मैम. 4. हाँ. x4 x0, दिया हुआ है. x0 0, x0, x1, 2 and x2 is 3. x2 5. is 5. x2 is 5. 5. Or then f of x0, f of x2 and all. F of x0, f of x0 ma'am 3, f of x1, 3, And f of and f of x2 is x2 is 18. 18. So formula for 3 points क्या हो जाएगा Lagrange's का? F of x0 plus f of x1 plus and last term आएगा f of x2 का. So I'm just writing the formula so that you all can put the values and get the answer. Put the values and get the answer. So x का value इधर है 4 minus x1 is 2, x2 is 5 upon x0 is 3, and the same points you will subtract from 3 into f of x0, which is 3. Ma'am, x0 is 0, not 3. Yes ma'am, x0 is What? 0. x0, अच्छा, I'm okay. talking on चलो denominator, ध्यान. ma'am. Good. 0. Fine.
So 2 minus 0 and 2 minus 5. Is this right? So 4 minus 0, 4 minus 2, then 5 minus 0, 5 minus 2 into 18. I hope I have substituted all the values correctly. So solve it individually and get the answer. फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है एनीबॉडी? -3/5, but I'll have to convert into decimal. -3/5. सेकंड का 2 है. थर्ड फोर माइनस मैम सेकंड में 2 -2 आ आएगा रहा है. ना, -2 आएगा. नहीं मैम 2 है बराबर है 2 है. माइनस लास्ट वन 5 into 3 तो या 3 5 या 3 6 8 to 6. Is this correct? Yes. So 5 would be the LCM. Now multiply 5 to each of the term. तो इससे multiply करेंगे 5 तो 5 will get cancel. बचेगा Ma'am, -3. actually the last term is to be positive. Positive, yes, positive. But Yes, for me, I'm ma'am. getting as 144/15. 44 you're getting. No, ma'am. From my side, I'm getting 144/15. 144 upon 15. So you get 144 will get cancelled, no? 3 से cancel होगा. Okay, ma'am. It's both of them are Yeah. divisible by 3. Yeah. So -3 plus this 10, 7. 7 plus 48, 55. 55 upon 5 कितना होता है? 11. So this is the answer for this question. Hope everyone has understood how to perform questions on languages interpolation. Yes, students. Yes, ma'am. So one last question I'll be giving you all for homework. ठीक है? Do try it on your own. And with this, I'm completing my unit 2 entirely. ठीक है? तो each and everything I have covered from unit 2. मैम आंसर राइट है वो. Yes. 11 is the correct answer. Okay, have I? Okay, ये question मैंने लिया है क्या? ये question I have taken. So. So estimate polynomial I'll write over here, not f of 3. So estimate polynomial. Poly लिखने मतलब polynomial करना है, ठीक है? From the following points. The points are this 0, 3, 1, 2 and 4, 11. So these are points. You have to estimate the polynomial. मतलब क्या? आपको polynomial निकालना होगा. आपको कोई value नहीं मिलेगा. आपको x as it is रखना होगा फॉर्मूले में
and you will have to solve that. ठीक है? Anyone having any doubt in this, they can ask me. All right.